Today, slogans are raised of the world being more civilized than before. But is this really true? The lust of materialism has eaten into the soul and fiber of human nature, and this is increasing day by day. The course of the history of the world has never before seen a similar pace of advancement as has been witnessed in the last century. All this advancement has resulted in is a desire for more. In today's materialistic world, this greed is growing so rapidly that it appears too fast to handle, and could eventually lead the world to destruction. The creator of the universe has always provided a practical way of establishing harmony among nations. 1400 years ago, God spoke through his messenger, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and revealed the key to establishing a harmonious environment. This same message was relayed by the awaited Messiah. Today, the world is being jolted again through the words of the supreme head of the worldwide Ahmadiyya Muslim community, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, about the catastrophe the world will see if it is not just in its dealings. I will, God willing, always continue to carry out my task and my responsibilities of promoting peace, tolerance, justice, and compassion to the corners of the world. This voice has reached the public. It has reached ministers and parliamentarians. It has reached the leaders of the world. These words have been conveyed through letters to those who can make a change. This has all been done to deliver one message, to unite humanity and bring everyone to the one and only pathway to peace. हज़रत खलीफतुल मसीहिल ख़ामिस अय्यदहुल्लाह ताला बिनसरिहिल अज़ीज़ फरमाते हैं, हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बग़ैर दुख के, बग़ैर तकलीफ़ के कुर्बानी नहीं हो सकती। हालात अगर बदले हैं तो हमने उसको बर्दाश्त करना है। ख़ास तौर पर उन्होंने जिन्होंने अपने आप को वक्फ़ के लिए पेश किया या जिनके माँ बाप ने अपने बच्चों को पेश किया और फिर उन्होंने इसकी तजदीद की कि हम अपने अहद जारी रखेंगे। जैसा कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जब इंसान खुदा के लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार हो जाता है तो फिर अल्लाह ताला नवाजता है, अल्लाह ताला नहीं छोड़ता और बेइंतहा नवाजता है। अल्लाह ताला करे कि तमाम वाक़फ़ीन नौ भी और उनके माँ बाप भी वक्फ़ की हकीकत को समझते हुए अपने अहदों को पूरा करने वाले हों और अपनी वफ़ाओं के मयारों को बुलंद से बुलंद तर करते चले जाने वाले हों। मोहब्बत के नग़मात गाएंगे हम, अख़ुवत की ताने उड़ाएंगे हम।